हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। सीआरपीसी मॉक 10th में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू एग्जामिन orally any person acquainted with the facts and circumstances of the case. The expression any person acquainted with the facts and circumstances of the case, जो ये एनी पर्सन है वो किसको इंक्लूड करेगा? एक्यूज को, डज नॉट इंक्लूड एक्यूज, रेफर टू द प्रोसिक्यूशन विटनेस ओनली, या बोथ बी एंड सी? आंसर इज डज नॉट इंक्लूड अक्यूज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस अंडर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो विटनेस की स्टेटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर रिकॉर्ड करेगा? 160, 162, 161 या 164? Answer is 160 of CRPC. Option A is correct. The magistrate records the confession of an accused or a statement of a witness during investigation under कौन से सेक्शन के अंडर रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट कन्फेशन? अक्यूज का और विटनेसेस का स्टेटमेंट 164, 281, 162 या चैप्टर 23 ऑफ CRPC? आंसर इज सेक्शन 162 ऑफ CRPC. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज a joint statement of several witnesses recorded during investigation will render these persons as incompetent witness, will render their evidences as inadmissible, will render these persons as incompetent witness, nor their evidence inadmissible, will render these persons as incompetent witness and also their evidence inadmissible. Answer is option A. उनको witnesses को incompetent माना जाएगा. Statement of a witness recorded under section 161 of CRPC in writing during investigation and is signed by the person making the statement is hit by कौन से सेक्शन के अंडर होगी? 161 क्लोज 2, 161 क्लोज 3, 162 क्लोज 1, 162 क्लोज 2. आंसर इज ऑप्शन सी 162 क्लोज 1 ऑफ CRPC. नेक्स्ट है FIR is not a substantive evidence. It can be used during trial to corroborate the informant, to contradict the informant, both A and B या neither A nor B. Answer is both A and B. Contradict and corroborate दोनों के लिए यूज होगी FIR ट्रायल के दौरान. नेक्स्ट इज FIR कैन बी यूज गिवन बाय द अक्यूज ऑल्सो. FIR अक्यूज के द्वारा भी दी जा सकती है. तो जो FIR अक्यूज के द्वारा दी जाएगी वो किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी? फॉर corroboration of the accused, for contradiction of the accused, as an admission if the same is non-confessional, against the accused as confession. Answer is as an admission if the same is non-confessional. अगर non-confessional statement हुई तो वो as an admission मानी जाएगी. 107 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. Statement recorded during investigation under section 161 of CRPC can be used during trial for corroborating the witness, for contradicting the witness, both A and B या neither A nor B. Answer is option C, both A and B, contradict and corroborate दोनों के लिए. If a person whose statement is recorded by the police during investigation is called as a defense witness, his previous statement before the police, जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट होगी वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी? कॉन्ट्राडिक्ट या कोरोबोरेट या कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज़, बोथ ए एंड बी. आंसर इज ऑप्शन बी, कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम. कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उस स्टेटमेंट के द्वारा उसको. नेक्स्ट इज सेक्शन 162 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट. इनमें से क्या प्रोवाइड करता है सेक्शन 162? बताइए, पढ़िए स्टेटमेंट्स. आंसर इज नो स्टेटमेंट मेड बाय द पुलिस बाय ए पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्यूस्ड टू राइटिंग शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द प्रोहिबिशन कंटेंट इन सेक्शन 162 ऑफ CRPC. जो प्रोहिबिशन दे रखी है 162 में वो किस पे अप्लाई होगी? Shall not apply where the statement made to the police during investigation is made admissible under any other provision of the code. Shall apply even where the statement made to the police officer during investigation is made admissible under any provision of the code as section 162 has in overriding effect. May or may not apply where the statement made to the police during investigation is made admissible under any other provision of the code depending on the facts and circumstances of the case. Answer is option C. Next is
द बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 162 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई टू, जो 162 बार लगाता है वो किस पे अप्लाई नहीं होता, सिविल प्रोसीडिंग्स पे, प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 34 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या 226 जो रेट कंटेन करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन ए, सिविल प्रोसीडिंग्स पे बार अप्लाई नहीं होगी वो। द वर्ड स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 162 ऑफ CRPC मीन्स, जो 162 में स्टेटमेंट वर्ड दिया गया है वो क्या कंटेन करेगा, उसका मीनिंग क्या होगा, नरेशन, साइंस एंड जेस्चर्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड नोट बी। आंसर इज ओनली ए एंड नोट बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 162 ऑफ CRPC, इनमें से बताने कि स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। Record of the search made by the police, signatures and handwritings or thumb impression during the purpose of comparison, both A and B, only A and not B. Answer is option C, both A and B. Which of the following statements are covered under section 162 of CRPC? बताइए 162 में कौन सी स्टेटमेंट कवर होती हैं। Statement made to a magistrate in the presence and hearing of a police officer. A statement made to a third person in the presence of police officer. A statement made to a person assisting the police in investigation of the case. Neither A nor B nor C. Answer is option C. A statement made to a person assisting the police in the investigation of a case. Section 162 of CRPC applies to statements made to a police officer during investigation by, किसके द्वारा दी जाती है वो स्टेटमेंट, विटनेस के द्वारा, अक्यूज पर्सन के द्वारा, अक्यूज हु टर्न्स अप्रूवर, ऑल द अबव। आंसर इज ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। सेक्शन 162 ऑफ CRPC प्रोहिबिट्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन एविडेंस मेड इन द कोर्स ऑफ, किस दौरान दी जाती है 162 की स्टेटमेंट जो एविडेंस के तौर पे यूज़ की जा सकती है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इधर ए और बी। बताइए आंसर इज ऑप्शन डी, इधर ए और बी। तो 162 प्रोहिबिट करता है कि ये स्टेटमेंट्स एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है 118। सेक्शन 162 ऑफ CRPC अप्लाइज टू स्टेटमेंट्स मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन बिगिन, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैड एंडेड, ऑल द अबव। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन वेदर ए स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए, जो स्टेटमेंट ये देखने के लिए कि वो इन्वेस्टिगेशन में दी गई है तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा या लॉ होगा, या मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग होगा, मतलब डिपेंड करते हैं। आंसर इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A previous statement of a witness which can be used for the purpose of contradicting the witness as provided under the proviso to section 162 clause 1 CRPC may be the one reduced in writing, not reduced in writing, oral, either A or B or C. Answer is option B, not reduced in writing. Where witness is called by the court as a court witness, a previous statement made by him to the police can, विटनेस कोर्ट में आता है कोर्ट विटनेस के तौर पे, तो उसने जो प्रीवियस स्टेटमेंट पुलिस को दी गई थी वो उसकी स्टेटमेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, बी यूज्ड बाय द अक्यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग सच विटनेस, बी यूज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग सच विटनेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इधर ए और बी, नॉट बी यूज्ड इधर बाय अक्यूज और बाय द प्रोसिक्यूशन फॉर एनी पर्पज़। आंसर इज ऑप्शन ए, बी यूज्ड बाय द अक्यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग सच विटनेस। नेक्स्ट है इन री एग्जामिनेशन द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड टू ए पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड फॉर, री एग्जामिनेशन में जो पिछली स्टेटमेंट दी गई थी पुलिस ऑफिसर को वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, द पर्पज इज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग विद वट इज स्टेटेड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, द पर्पज इज ऑफ एक्सप्लेनिंग वट इज लेफ्ट ओवर इन द चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ, द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 क्लोज 1 ऑफ CRPC, स्टेटमेंट फॉलिंग अंडर सेक्शन 32 क्लोज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट,
Statement falling under section 27 of the Indian Evidence Act. Statement recorded by the police officer during investigation. Neither A nor B nor C. Answer is statement recorded by the police officer during investigation. Option C is correct. Next is the non-compliance with the provision of section 164 of CRPC reduced the statement recorded by the magistrate to a nullity is an irregularity curable under section 463 of CRPC. Both A and B, neither A nor B. Answer is option C, both A and B. Next is a confession of an accused or the statement of a witness under section 164 of CRPC can be recorded during inquiry, investigation, trial, either A, B or C. Answer is during inquiry. Option A is correct. The confession of an accused or the statement of a witness under section 164 of CRPC may be recorded before the beginning of the investigation, in the course of investigation only, in the course of investigation or at any time afterward before the commencement of inquiry or trial, in the course of investigation or at any time afterwards during the inquiry but before the commencement of trial. Answer is in the course of investigation only. Option B is correct. Next है a confession under section 164 of CRPC can be recorded by किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी कन्फेशन 164 के अंडर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर ऑन whom the power of a magistrate has been conferred, either A or B. Answer is option C, police officer on whom the power of a magistrate has been conferred. Next, maintenance of a case diary by an investigating officer is, जो केस डायरी की मेंटेनेंस की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है, नीदर बी नोर सी. आंसर इज डायरेक्टरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेंटेनेंस ऑफ ए केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर मैंडेटरी है? 167 ऑफ CRPC. Section 167 of CRPC authorizes remand of an accused in police custody, judicial custody, either A or B, neither A nor B. Answer is either A or B. This is section 131. Question 131. Section 167 of CRPC is applicable during investigation, inquiry, trial, all the above. Answer is during trial. Option C is correct. Next है dash is competent to record the statement or confession under section 164 of CRPC. 164 के अंडर कौन competent है confession रिकॉर्ड करने के लिए, statement रिकॉर्ड करने के लिए? police officer. A police officer conferred with the power of special executive magistrate. Executive magistrate, neither a police officer nor a police officer conferred with the power and nor executive magistrate. Answer is option A police officer. Next है 133. Under section 164 of CRPC, statements other than confession, जो confession से other statement होती हैं, वो किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएंगी 164 के अंडर? Answer is can be recorded by the magistrate without going into the question as to how or who has produced or sponsored the person who intends to make such statement. Option D is correct. Obtaining signature of the on the confession of the person making the confession under section 164 of CRPC is mandatory, directory, being procedural, discretionary, optional. Answer is that discretionary. Option C is correct. Failure to give the signature of the person making the confession is, जो कन्फेशन जिस पर्सन के कन्फेशन ले रखे हैं, कन्फेशन लिया गया है, उसके सिग्नेचर ना हो, मतलब वो सिग्नेचर लेने में असफल हो, तो मटीरियल होगा या नोट मटीरियल होगा? वो नोट वेरी मटीरियल इफ द मेकिंग ऑफ सच स्टेटमेंट इज नोट डिस्पैच्ड बाय द अक्यूज्ड. नोट वेरी मटीरियल इवन इफ द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट इज डिस्प्यूटेड by the accused. Not very material irrespective of whether making such statement is disputed or not disputed by the accused, and the defect is curable under section 463 of CRPC.
very material in all circumstances and is fatal. Answer is not very material if the making of such statement is not dispatched by the accused. Option A is correct. Next is Section 164 of CRPC provides for recording of, इसकी रिकॉर्डिंग दे रखी है 164 में, confession by accused and statements by any other person other than the accused, confession by accused person and statements by any person including an accused, statements by witnesses only, confession and statements by an accused person. Answer is option A, confession by accused person and statements by any person other than the accused. Next is Section 164 of CRPC provides a special procedure for recording of, स्पेशल प्रोसीजर किसका दिया गया है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, कन्फेशंस, स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कन्फेशन एज वेल एज स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईदर ए और बी. आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. A non-confessional statement recorded under Section 164 of CRPC. नॉन-कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है 164 के अंडर. वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, मे और मे नॉट बी सब्सटेंटिव एविडेंस डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस या ऑल द अबव. आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज A confessional statement recorded in accordance with the special procedure under Section 164 of CRPC can be used as a substantive evidence without being formally proved, cannot be used as substantive evidence at all, cannot be used as a substantive evidence without being formally proved, either B or C. Answer is option B, cannot be used as a substantive evidence at all. Next is a confessional statement under Section 164 of CRPC can be recorded. कब रिकॉर्ड की जाएगी? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली एंड नोट आफ्टरवर्ड्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज ड्यूरिंग इंक्वायरी बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. आंसर इज option A, during the course of investigation only. 141. Statement of witnesses recorded under Section 164 of CRPC are substantive evidence, corroborative evidence, both substantive and corroborative evidence, neither substantive or nor corroborative evidence. Answer is option B, corroborative evidence. Next is, if a magistrate administers oath before recording the confession, the confessional statement is good in law and admissible in evidence, good in law but admissible in evidence only on corroboration, bad in law and inadmissible, bad in law but admissible in evidence if corroborated from other evidence. बताइए, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन ओथ पे लिया जाता है वो कैसी होगी स्टेटमेंट? आंसर इज गुड इन लॉ बट एडमिसिबल इन एविडेंस ओनली ऑन corroboration. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज वेयर एन अक्यूज्ड रिमेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days, ही कैन फर्दर बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी बाय. 15 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिल चुकी मैक्सिमम अक्यूज्ड को, तो उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी किसके द्वारा दी जाएगी फर्दर? मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, in exercise of its inherent powers. No, neither A nor B nor C. Answer is option C. केवल हाई कोर्ट दे सकता है, वो भी उसकी inherent powers यूज करके. Next is under section 167 of CRPC, the longest period for which an accused can be remanded to police custody is. longest period कितना है पुलिस कस्टडी का? बताइए. 15 days, 14 days, 10 days, 28 days. Answer is option D, 28 days. Where an accused is granted bail under section
167 clause 2 proviso A of CRPC, and on filing a charge sheet, the investigation reveals that the accused has committed a serious offence. The bail so granted under section 167 clause 2 proviso A of CRPC cannot be cancelled in the absence of special reason, can be cancelled under section 437 clause 5, can be cancelled under section 439 clause 2, can be cancelled under section 437 clause 5 or section 439 clause 2. Answer is option A, cannot be cancelled in the absence of special reasons. Next is, entries in the case diary mentioned by an investigating officer under section 172 of CRPC can be used as an evidence to explain contradiction, for aiding the court to decide on a point both B and C. Answer is for aiding the court to decide on a point. Option C is correct. Next is, under section 172 of CRPC, the bar against production and use of case diary is intended to operate in an inquiry or trial for an offence, civil proceedings, writ proceedings, all the above. Answer is option A, an inquiry or trial for an offence. Where the police submits a final report under section 173 of CRPC to a magistrate, the magistrate is, बताइए मजिस्ट्रेट बाउंड होगा या बाउंड नहीं होगा, बाय द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द पुलिस एंड कैन नॉट order re-investigation, not bound by the conclusion drawn by the police and may direct in re-investigation or issue process, bound by the conclusions drawn by the police and has to issue process, both A and C. Answer is not bound by the conclusion drawn by the police and may direct re-investigation or issue process. बाउंड नहीं है मजिस्ट्रेट, जो पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट मतलब चार्जशीट सबमिट की गई है उसकी स्टेटमेंट्स पे. नेक्स्ट इज, where the police submits a final report under section 173 clause 2 of CRPC for dropping of proceedings to a magistrate, the magistrate may accept the same, may reject the same and may take cognizance, may reject the same and order further investigation, all the above. Answer is all of the above. Option D is correct. तो ये थे आज का CRPC मॉक 10th के क्वेश्चन. फॉर नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब